Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of class 2. How are you? I hope you all will be fine. Dear students, welcome back to our science class. Dear students, today we are going to solve exercise number 1. Choose the correct answer. Okay, so let us start. Exercise number 1 on book page number 5. Okay, first is, what do we call the place where bonds meet? बेटा उस जगह को हम क्या कहते हैं जहाँ पर दो बॉन्ड्स मिलती हैं? ऑप्शन ए ऑर्गन, ऑप्शन बी मसल, सी जॉइंट, डी लिंक. सो डियर स्टूडेंट्स, द प्लेस वर टू बॉन्ड्स मीट इज कॉल्ड अ जॉइंट. बेटा जहाँ पर दो बॉन्ड्स मिलती हैं उस जगह को हम क्या कहते हैं? जॉइंट. ओके, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. ओके, नेक्स्ट इज, which of these is the name for the bones in the head? Option A scale, option B skull, option C spine, option D joint. बेटा हमारी हेड की जो बोन्स होती हैं उसका नेम क्या है? उस बोन्स को हम क्या कहते हैं? स्केल, स्कल, स्पाइन और जॉइंट. सो डियर स्टूडेंट्स, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी joint. Okay, we will be tick on option B. Next is, which of these is not one of the five senses? Option A sight, option B belief, option C hearing, option D touch. बेटा इन 4 ऑप्शंस में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमारा 5 सेंसेस नहीं है? ओके, साइट, हेयरिंग, touch, these all are our 5 senses. Belief is not a 5 senses. So the correct answer is option B, belief. Okay, next is, which is the odd one out? Hip bone, rib, jawbone, skin. So dear students, the correct answer is option D. बेटा हिप बोन, जॉबोन, रेब ये सब क्या है? बॉन्स हैं. स्किन जो है वो इन तीनों में से डिफरेंट है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, स्किन. ओके, नेक्स्ट इज, विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ यूज टू ब्रीथ विथ? ब्रेन, हार्ट, लंग्स एंड स्टमक. द स्टूडेंट्स, द करेक्ट आंसर इज लंग्स. ओके, वी यूज़ आवर लंग फॉर ब्रीथिंग. बेटा हम अपने लंग्स जो हैं वो किस लिए यूज़ करते हैं? ब्रीथिंग के लिए. ओके, हम सांस किसके ज़रिए लेते हैं? विद द हेल्प ऑफ लंग्स. Dear students, now today's your homework is solve exercise number 1. Choose the correct answer on book page number 5 and also memorize this exercise. बेटा आपको ये एक्सरसाइज अपनी बुक पे करनी है और इस एक्सरसाइज को आपने मेमोराइज भी करना है. ओके स्टूडेंट्स, वी विल बी continue our next class tomorrow. Okay, thank you. Allah Hafiz.